गुड मॉर्निंग। ये हमारी एमएससी प्रीवियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आजकल रिएक्शन मैकेनिज़्म। और रिएक्शन मैकेनिज़्म हमने स्टार्ट किया रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। एंड इन रिएक्शन इंटरमीडिएट सो फार वी हैव फिनिश्ड everything about carbocation in previous lectures, and today we are starting another reaction intermediate, that is carbanion. Now first of all, you understand what is carbanion, what is its structure, then how it is formed, then stability, reactions involving carbanion, all we will do. Okay, so what is carbanion is, see, carbanion is such a species in which carbon is bonded to three other atoms, and has unshared electron pair. This type of species, that is, carbon is having bonding with three other atoms or groups and has unshared pair of electron, and hence it will be electron rich species. Count is 1, 2, 3 to 5. Carbon is having 5 electron with it, and hence it is a negatively charged species. Now this type of species is a carbanion, that is, carbon atom with 3 bonds and an unshared electron pair is called carbanion. Hence it is an electron rich species. Now carbanion can again be primary, secondary or tertiary depending upon the nature of carbon atom bearing negative charge. For example, see, we are attaching, okay, right, I am writing directly, say CH3, no, CH3 is this, and say we are having CH3, CH2, this methyl carbanion, ethyl carbanion, and say we have isopropyl carbanion, and say we have, as the name suggests, it is tertiary butyl carbanion. So this is methyl carbanion, but this one is primary. Name will be ethyl carbanion, but it is primary because this carbon having negative charge is primary one. This carbon having negative charge is secondary, so hence it is secondary. It will be isopropyl carbanion, and this will be tertiary, that is tertiary butyl carbanion. Just we started ki carbanion can also be primary, secondary and tertiary. Okay. After that, let us see what about the structure of carbanion. Next हम देखते हैं कि carbanion का structure जो है वो कैसा होता है. अब इसके अंदर आप ध्यान से देखिए कि जो this carbon is carbanionic carbon, negatively charged carbon. Now this carbon is sp3 hybridized. कैसा होगा? This carbon is sp3 hybridized. sp3 hybridized means it will be having 4 orbitals. Let us see like this. It will be having 4 orbitals, and all these 4 orbitals have 1 electron. Out of these 3 have 1 electron. They will form 3 bonds, and one of the sp3 hybrid orbital is completely filled. One of the sp3 hybrid is completely filled. Now they will form 3 bonds, and it is unshared electron pair, and this is the structure of negatively charged carbon of carbanion. Okay, but important point about this is simple. Okay, but normally you will see that the carbanion is like this. And but very important point about this is that if, listen this point very carefully, that this carbanionic carbon undergoes a very rapid interconversion between 2 pyramidal forms. ठीक है, और इसके लिए क्या एविडेंस है? देखो एविडेंस बताता हूँ. इसके लिए क्या एविडेंस है कि that chiral carbanion never forms product with retention of configuration. That is very important point, so you note it down. Chiral carbanion never forms product with retention of
configuration, with retention of configuration. Because this is a very, very important point, or very useful to us when we study reactions having chiral carbon. It is because unshaded pair and a central carbon rapidly oscillates from one side to another, like this. See, now this is applicable only on chiral carbon. Let me try to draw this. See, it is this carbon. It is having 3 bonds like this, and because we are showing chiral carbon, and this is unshaded electron pair, and this is the negative charge. Why it will not form is that it will undergo rapid interconversion. In दोनों के बीच में एक oscillation, they keep on oscillating. Oscillating means it will be like this. It will be like this, and say this. So when it oscillates, configuration changes. And hence, when, this is very important point, that chiral carbon ion never forms product with the retention of configuration. Second very important thing about this structure is, जो आपको बिल्कुल इस क्लास में अच्छी तरह पता होना चाहिए कि normally देखिए, you will see later on कि when it is formed, it is not formed by heterolytic fission of alkanes में जो कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन H बॉन्ड होता है, उनके heterolytic fission से इसका बनना बहुत डिफिकल्ट होता है. It is very difficult to form from this. तो इसलिए it is normally formed when this alpha carbon is attached to electron withdrawing groups like nitro, cyanides, carbonyl, ester, aldehyde, like that. तो in that case, see what is the important point, और उसके लिए evidence बताऊंगा क्या होता है. Say this is the carbanion formed, and this carbanion is a carbon alpha with respect to nitro group, and this is our nitro group. ये group हमारे पास कौन सा group है? Nitro group. This is a nitro group. Okay. Now this is a nitro group like this. तो इसको अपन चार्ज शो करना चाहते हैं, शो कर सकते हैं कि it is a positively charged and it will be a negatively charged, और otherwise कुछ चलता है. अब देखिए, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, बहुत ध्यान सुने इस पॉइंट को. स्ट्रक्चर पढ़ा कि sp3 हाइब्रिडाइड, बट दिस कार्बन इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइड. दिस कार्बन जो है, दिस इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइड. दिस कार्बन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये कार्बन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड. व्हाई इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इज, एविडेंस देंगे इसके फेवर में. एंड दिस इज वेरी नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट याद कर लेते हैं, कार्बन एंड कार्बोकैटायन तो sp2 था, ये कार्बन एंड sp3 इज ओके, बट इट इज ओनली इन एलिफेटिक. व्हेन इट इज फॉर्म्ड इन अ सैचुरेटेड रिंग, it is sp3 hybridized. But when it is formed, when the groups like nitro, cyanide or carbonyl, ester are attached to this, why it is so? This, let us see. इसका एविडेंस देखिए आप ध्यान से कि इसका ये अगर रेजोनेंस हम स्ट्रक्चर लिखें, if this electron pair comes over with double bond, this will be this, and this electron pair will come at this position. So it will be like this, and like this. This remain as such. This is this. Now it is also having a negative charge. Overall charge is same in this. Now hence it is a planar structure. This type of conjugation proves that it is a planar structure. ये structure कैसा है? Planar structure है. तो planar structure होने का मतलब क्या हो गया? Planar is possible, and this type of resonance and conjugation is possible only if it is sp2 hybridized. If it is sp2 hybridized, that is, if we draw the structure for this. Now you know sp2 hybridized carbon. sp2 hybridized carbon is like this. This is the carbon sp2 hybridized, having 3 bonds in one plane. Nitrogen. Nitrogen also sp2 hybridized. Nitrogen will be this, like this, and it will be forming 3. Done. And this oxygen, it is forming bond with oxygen. This is forming this bond with oxygen. Done. Now this carbon and this carbon can do overlapping only if 2 perpendicular p orbitals are there. That is, this is in one plane, and this is possible only on this
type of bonding is possible only when they are perpendicular to each other and they are in one plane, and this is possible only when this carbon is sp2 hybridized. ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब ये कार्बन कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा. आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर. तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर क्या कह सकते हैं हम इस बात को कि अनकंजुगेटेड एनायन जो है, से इन जनरल आप इसकी समराइज करके अपन क्या बात करेंगे, स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अनकंजुगेटेड एनायन इज sp3 hybridized and they will be just like pyramidal structure. क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, pyramidal, because one of the sp3 hybrid orbital is completely filled, just like in nitrogen. Okay, but when a carbanion is conjugated with a pi system, it is sp2 hybridized. This is a very very important point, you should note about this. और यही पॉइंट हमारे काम आएगा कि मैक्सिमम जो कार्बेनाइन मिलेगा आपको ऐसा मिलेगा. इसकी बात मैं क्यों बता रहा हूँ इस पर कि हाउ, व्हेन वी सी कि हाउ इट इज फॉर्म्ड, तो नॉर्मली इट विल नॉट बी फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ this heterolytic cleavage of these bonds in saturated compounds like alkanes. It is not formed because energy required to break this bond is very high. This energy क्या होगी इनकी, बहुत ज़्यादा होगी. तो when it is formed very easily, ये कब ज़्यादा easily बनेगा, ये आप ध्यान से देखिए इस बात को कि when it is formed from those compound which contain a functional group which can weak this CH bond. वो क्या कर सकता है, ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हो जो इस CH बॉन्ड को क्या कर दे, वीक कर दे. दैट इज ग्रुप्स लाइक नाइट्रो, साइनाइड, carbonyl and ester, or other attracting group, any attracting group like acid. In general you can say attracting groups are present in alpha to this, even triple bond, and a triple bond will make it acidic, then this is formed by heterolytic fission of CH bond, because they will take up the proton, and when they take up the proton, this electron pair will come at this, and when this electron pair comes at this, it is formed very easily. Otherwise it is not formed from saturated, it is not formed. So thus this is how it is formed. Okay, next we want to see about the stability of carbanion. Okay, इसके बाद हम क्या देखेंगे, stability of carbanion. Okay, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे stability of carbanion में. एक चीज़ मैं कहूँगा कि जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो अपनी कॉपी और पेन जरूर लेके बैठें, और कॉपी और पेन लेके बैठ के जो चीज़ जैसे बताई जा रही है मैं बिल्कुल वैसे आपको बता रहा होता हूँ जैसे कि बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, और उसको आप ध्यान से नोट करिए और अपने नोट्स बनाइए, साथ साथ जो बात लिखाई होती है, जो बोलता हूँ मैं बात आपको डेफिनेशंस नॉर्मली मैं पेज पे नहीं लिखता हूँ क्योंकि उसमें फिर बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मेन पॉइंट है वो बता दिए जाते हैं, तो उनको आप मेन पॉइंट को सारे नोट करो और यही आपके क्या बन जाएंगे नोट. कार्बोकटाइन जैसे आप फॉर एग्जांपल, तो कार्बोकटाइन के कम से कम अपने 6-7 लेक्चर अभी तक हुए हैं, उनको राइट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट आप देखिए तो आपको पता चले कितनी चीज़ हमने कवर की, एंड वी हैव नॉट लेफ्ट एनी पॉइंट. सिमिलरली वी विल डू इट इन कार्बेनाइन, इसी प्रकार हम कार्बेनाइन में करेंगे. आज हमने जस्ट स्टार्ट कर लिया है. व्हाट इज कार्बेनाइन स्ट्रक्चर में बिल्कुल अच्छी तरह 2 पॉइंट मैंने बताया, ध्यान रखना. तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि इफ इट इज़ ए चिरल कार्बन, वो मैंने इसीलिए लिख भी दिया है, देन इट ऑसिलेट्स. इसका एविडेंस बता दिया कि जब भी चिरल कार्बन बनता है, कोई रिएक्शन में ऐसा बनेगा तो जो प्रोडक्ट बनना है वो कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर रिटेन नहीं होती है, retention of configuration is not there. This is the evidence in favor of this. Okay, keep doing your work. Thank you very much.